what I like about this lineup, Yeah. setup is okay. Like I said, the mental maturity, the musicianship, the seriousness. I mean, सांवल मोड़ मुहारा सांवल मोड़ मुहारा सांवल मोड़. Me, Shani and Ajay were working in a band setup, and we were just playing because we're friends and we enjoy playing music together, and we thought we should make some music. After that initial thing didn't really work out for whatever reason, so then we were looking for maybe additional members, another vocalist. So Zishan was actually hanging out at Alif in those days, and we were also like in this position कि यार मेहनत की है कोई 6-8 महीने लगाए एक चीज़ पे और फिर एक अटक गई ना चीज़. I mentioned Shani. What about Zishan Ali? Because he was just there, सामने बैठा होता था रोज रियाज कर रहा होता था. और Shani was like, "Hey, that's a good idea." तो Zishan, and when we talked to Zishan about it, he was very very बहुत खुशी से like हाँ definitely मैं भी यही सोच रहा था. और उसके बाद John, like I played with John a few years back, and he's always been in the back of my head कि like I want to have John in the band, like just because Monster on keyboard and composition and all that. तो उस पे इत्तेफाक से he also I think इसी time पे like came back into the scene playing music, and we just got him on board. We played, I think, एक दो jam किया, and it was like sort of a no-brainer. It sort of very gelled in very nicely. Or then we were at Alif, and suddenly we were making like more serious music than we were making before. साध जोश फाला ये जो मेलोडीज़ हैं तो ये बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और बहुत ज़्यादा स्किल लेवल जो है आपका वो बहुत रिफाइन होना चाहिए. तो मैं सोचता था हमेशा कि कभी इनको मैं प्रॉपर तरीके से कभी गाऊंगा या कभी इस तरह रिकॉर्ड करूंगा. तो अलिफ पे मैं हमेशा ऐसे आता था जैम्स के लिए और यहाँ बैठ के रियाज़ करता था, क्योंकि यहाँ मुझे रियाज़ करने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसका पूरा माहौल इस तरह का बना हुआ होता था. तो जब मेरी मुलाकात हुई जासिर भाई से, शानी भाई से, अजय से, जॉन से, तो हमने पहली मीटिंग के अंदर ये डिसाइड कर लिया था कि पहले 2-3 गाने कौन से होंगे. क्योंकि हमने साथ बैठ के अकोस्टिक एक जैम किया तो मुझे उससे आइडिया हो गया, वो उतना मेरे लिए काफ़ी था ये समझने के लिए कि यहाँ पर वो चीज़ें की जा सकती हैं. तो हमने यही किया है कि जो बहुत पहले होना चाहिए था, क्लासिकल म्यूज़िक तक रसाई आम लोगों की भी उतनी होनी चाहिए थी, और ख़ास लोगों, क्योंकि म्यूज़िक किसी आम या ख़ास का नहीं है. तो हमने यही किया है कि हमने उसको बिल्कुल इजी करके, और हमने कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं डाली कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लासिकल म्यूज़िक सुनता ही है या उसको क्लासिकल के बारे में कुछ पता है तो उसको ये समझ में आए, बल्कि ये प्योरली क्लासिकल मेलोडीज़ हैं लेकिन ये किसी भी आम लिसनर को याद हो सकती हैं. तो हमने बेसिक्स वही रखी हैं उनकी, यानी मेलोडी वही प्योर क्लासिकल है, लेकिन उसको इस अंदाज से करने की कोशिश की है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम से कम की जाएँ ताकि वो आम लोगों तक पहुँचे और वो उसको एंजॉय कर सकें. When I met John, like very recently, we both were really into that stuff, I mean, we really like are both digging that similar vibe. So we just thought that that would be a good direction for the band to go, including that Western stuff with of course, the basic of our music is this kalam, this idea. And these words mean a lot. They've been around, मतलब कुछ तो 3-4 100 साल पुराने वर्ड.
So they hold a certain weight. So of course we want something music to just be just a vehicle to carry that. But वो आप कुछ इस तरह करना है कि वो खराब भी ना करे and keep the actual essence, but also making it slightly new. So that was the basic idea that we went with. अब उसमें यह है कि ज़ाहिर है we were lucky enough to first rehearse and we kind of sorted all our sound, and then we were lucky to be able to record that live. I guess it's also because of the first thing I'd say, the mental maturity. Yeah. See, and like as Zishan and Shani said, it's about those drugs and whatever. I mean, there's no such thing as, you can't define music to East and West or whatever. You see, there's no kind of, it's not in a box. वो एक अपना साउंड है, अपनी फील है, इसलिए बनाने में म्यूज़िक ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि ये नहीं है कि किसी प्रोड्यूसर के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं ये बजाना है. ऐसे तो बहुत एल्बम्स, बहुत गाने बजाए हैं, बट अपने बैंड के लिए बजाना एक अलग सीन है, अलग फील है, अलग टाइम देना पड़ता है और बहुत सोच समझ के कुछ बनाना पड़ता है. इन गानों में जितनी भी बीट्स हैं, ये मेरा स्टाइल है जो मैंने कहीं भी नहीं दिखाया, जो इस सुरख्वाब में मैंने